सुनहरी हमारे घर आ रही हो? राम सिया राम जय जय राम। हर जय विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी मैं तोरा। राम सिया हो, भजो सिया हो, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। मेरे घर जन्म बलि, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहा सिया मरे जाना, सब धन समाना। राम भजो सिया हो, भजो सिया हो, भजो सिया हो। विधि मोहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। लक्ष्मण राम भजो सिया हो, भजो सिया हो, भजो सिया हो। यही विधि होहि नाथ हित मोरा। तुम पे क्या गुजरी है हाँ क्या हो रहा?
व्याख्या हो राम सिया राम जय जय राम। वही विधि हो ही नाथ तुम्हारा करम सुदेहि तुम्हें तोरा हो। व्याख्या हो राधे 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 राधे। कहाँ खो गए थे यार? हाँ, और बिरादरी भाई बोलो। हाँ, बहुत याद आए आप। जय हो जय हो। क्या हो रहा है इस समय? हम तो कहीं भूल गए लगता है गुरु जी को। हाँ, आज सावन को नहीं, भादों को सोमवार है। बाबा भोलेनाथ आपकी कृपा करें, मनोकामना पूरी हो जल्दी से। और बताएं, घर में कैसे हैं सब लोग? अच्छा, एक डॉक्टर वाली देखा वीडियो? हाँ, डॉक्टर वाली। हाँ, अब कब मुलाकात होगी यार? हाँ, 29 तारीख को आना मेरे गाँव। हूँ 29 तारीख को जल्द बिहार है। हाँ, वहाँ मेरी पूरी टीम आएगी। हाँ, 29 तारीख इसी को। महिला भतीजी है मेरी, उसी साथ वीडियो आएंगे अब। हाँ, उसका भी चैनल है, सोनम कुशवाहा नाम से है। गाँव जानते हो ना मेरा? हाँ, 29 तारीख को मेरे छोटे भाई मेला का लगाते हैं, जल बिहार वाला। हाँ, हाँ, जो वीडियो बना है वो भतीजी है मेरी। हाँ, सोनम, उनका भी चैनल है, सोनम कुशवाहा। हाँ, उनतीस तारीख को आना हमारे गांव। और क्या तैयारी वारी चल रही आगे? घर में सब लोग कैसे हैं जेके जी, बताएं। मम्मी पापा चरण स्पर्श बोल देना गुरु जी की तरफ से।
आजकल ज़्यादा व्यस्त थे, काफ़ी दिन बाद आए। इधर कपड़ा बनना 29 तारीख को पहनने के लिए। बोलो जी केशोर जी, आओगे ना 29 तारीख को? कमेंट तो करो यार। राम सिया राम जय जय राम। विधि होई नातीत मोरा, करहु सुबेगिदास मैं तोरा। राम भजो सिया हो। मोरा करहु सुबेगिदास मैं तोरा। विधि होई नातीत मोरा, करहु सुबेगिदास मैं तोरा। सिमर राम भजो सिया हो, भजो सिया हो, भजो सिया हो। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहा हसी हमरे जाना, देव सब धनुष समाना। सिया राम हो। पीछे थोड़ा
बताएं अरोड़ा जी कैसे हो? ध्यान देके बोल देना आज, ठीक है? कहना जो पैंट बढ़िया हो वही भेजो हम। पैंट का नाम दे दो। हाँ। बताएं अरोड़ा जी। हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे करम से। और अनुराग बताएं कैसे हो? अनुराग तुम कब से लाइव शुरू करोगे यार? पूछ रहे जवाब नहीं दिया था आपने। देखो रूबी लाइव शुरू कर दिया है। हाँ, लाइव से सब्सक्राइब बढ़ेंगे, वॉच टाइम मिलेगा, दो फायदे होंगे। हाँ, ना फेस दिखाएगा तो जैसे आरती नहीं दिखाती, अपना फेस मत दिखाओ, काम करते हुए दिखाओ। हम बोलो अनुराग। तुम पे क्या गुजरी है हम तुमको बताएंगे। सही बात कहा तुमने, बहुत बढ़िया कहा। हाँ, लाइव में बहुत नेट लगता है। हाँ, लाइव में काफ़ी नेट लगता है। उसके लिए 5G फ़ोन चाहिए नेट के लिए। हाँ, वीडियो बनानी था, अपलोड करना था तो सपोर्टिंग भी करनी रहती। चले कहीं नहीं गए थे, खाना खाने लगे थे, लंच। वीडियो देखा अनुराग वो? हाँ, अहमद जी वीडियो हमने डाला है, कल देखना उसको। हाँ, अनुराग तुम भी देखना, अहमद जी आप भी, एक वीडियो डाला कल, लेडीज डॉक्टर वाला। सोनम दीदी डॉक्टर बनी है। और अनुराग बोलो।
नेट नहीं चल रहा उसमें यार अहमद जी। पता है, सपोर्टिंग करते हैं कभी कभी, जब शीशा बंद कर लेते हैं वो ऐसे आवाज नहीं आता नेट। हाँ, उसमें नेट नहीं है। उसको रिचार्ज नहीं कराते ना। हाँ, रिचार्ज खाली एक फोन कराते हैं। अनुराग से बोलो, अनुराग है, अनुराग का कमेंट करें जल्दी जल्दी। राम सिया राम हाँ बोलो। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक ठीक।
लोग हैं खुश रहना प्यार नहीं करना राम सिया राम सिया राम जय जय राम और तुमको जब गिरी हैं हम तुमको बताएंगे चीर के अपना दिल हम तुमको दिखाएंगे शाही कहा शाही कहा राम सिया राम जय जय राम और भैया राजकुमार बढ़िया चाचा आज मास्टर साहब मैंने कहीं गए हैं अभी तू कहाँ चली गई स्कूल के सामने रखा है दुकान में। और बताओ आज अप्लाई काटने के लिए आया लेकिन सारी बत्ती चली गई यार ऐसा तू फोन किए थे क्या हाँ कितने बजे कहीं 11 बजे करीब 3-12 अरे वो दूसरी जगह फोन रखा कहीं दूसरी जगह पर थे हम समझ गए वो आया तो क्या हुआ लेकिन आया था बत्ती चली गई है तो फिर कहाँ कहीं छोड़ा कट नहीं पाई बत्ती नहीं थी अभी अभी आई है ये देखो सूट टूट गई इसलिए उठा लो वहाँ सामने से हाँ खलीफ होगा खाली है क्या
बैलून है दे दो। किसका बर्थडे है? दादी का बर्थडे है क्यों? गाड़ी कमाई कहा दीजिए खर्चे ही इसके दस पाँच करके कम से कम 100 शाम तक आ जाएगा। दूसरे कलर के दो और कलर के नहीं। 10 रुपए के आया आया बाबू क्या है सुनाओ पहले कौन सा गाना है? सब वीडियो ये कहेंगे का हम होमवर्क है करो करो नहीं एक आध चीज तो कौन देख पहले सुनाओ कौन सा दोनों रिहर्सल कर लो कौन कौन से गाने गाना है। सुनाओ कैसा देते हिंदी आती है
करी ये नहीं करा यूं जान जाए कोई ना जो करा दी दुख मत सुनाओ, अरे लेकिन रात में ये तो है कि पर यार वो से निकाल लो पैसा, हम डाल दो, निकाल लो जितने निकाल दो, यही कर जाओ। टीका पे नहीं के यहाँ रख लिया ले 20 रुपए का पेन आता है काले रंग का, अरे वो चाहे 25 का दिन सही हो कोई दिक्कत नहीं। नहीं 20-25 का आता है, बहुत अच्छे चलता है। मेरा चश्मा देख लेते हो? थोड़ा बहुत अगर जैसे ना निकले सब बात बराबर है, बढ़िया कलम खरीद ले। अच्छा पलटा वाला कलम दे दे। अरे पहले देखो पेन तो बहुत है मेरे पास, मेरे पेन होंगे 25-30 पेन। अभी क्या सुना है, अभी लिखा ही नहीं। अरे कागज में सुनाओ, कागज में सुना जाओ कागज। आपसे राय रही है ना पूरा, समझ में आ रहा नहीं लिखा हुआ। वो पागल आ गए ए आंटी बताओ तर्ज बताओ। हम थोड़ा अलग हटके से गाते हैं। जरा शब्द आपने लगाया पहले, जरा शब्द आपने पहले लगाया तो आपकी समझ में सही होगा। मेरी समझ जरा शब्द पहले- हेलो, कैसे हो? फिर सीधा होना चाहिए। फूलों से सजा दो गोकुल को मेरा लल्ला बोलो शहनाज। तो गाने के ऊपर है। नहीं, अब पहले जरा शब्द लगाया कट रहा है कि नहीं? धारा प्रवाह नहीं, जरा शब्द पहले हटा, जरा शब्द बीच में लगे। और कैसे हैं मौसी जी, कैसे हैं? सुनाओ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जरा फूलों से सजा दो गोकुल को। लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहन सब घर में अच्छे हैं? ये शहनाज आपने लिखा है ड्राइव टू स्पेन, इसका मतलब क्या होता है? हम कई दिन से पूछने वाले थे। हाँ, इसको हिंदी में लिख के बताएं बहन, क्या होता है इसका मतलब? है ये आपने जो लिखा चैनल नाम, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? इंग्लिश नहीं आती ना हमको बहन, है हम पढ़े नहीं है। लेकिन तर्ज वही है, इसकी तर्ज का एक और गाना देखो। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? शहनाज ड्राइव टू, इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? मनमोहन मौसी जी से बोल देना। मनमोहन
अब मैंने ये क्या आज कहाँ घूम रहे थे सुनहरी मौर्य, बताए? हाँ, वो इधर फोन कर रहे भैया, बात करने के लिए, बातें नहीं कर रही थी। बोलो सुनहरी। राधे 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 राधे। हाँ, आज बाइक से कहाँ घूम रही थी? एक सूची बनाएंगे जैसे आप बनाते हो, बढ़िया रहता है। उससे थोड़ा देखा। और कौन कौन से गाना थे वो? ये ही बस ये अभी कहाँ, अभी तो हाँ, हम कह रहे थे कहाँ घूम रही आज। रातों की रात में कितने किलोमीटर है वहाँ से वहाँ तक? अच्छा, इंग्लिश नहीं आती ना हमको, इसीलिए हम कम पढ़ पाते हैं इंग्लिश। हाँ, बहुत कम पढ़े हैं हम। आपका फिक्स टाइम कितने बजे लाइव आते हैं शहनाज बहन, बताएं, हम आया करेंगे रोज। हाँ, हम पूरा दिन लाइव रहते हैं, जब आपके पास टाइम होता है आए बहन। हाँ, हमारा हिंदी में कमेंट लिखा करें। हाँ, अब कब लाइव आएंगे आप शहनाज बहन? वीडियो चला। नहीं चलने तो आप करो, उससे कोई मतलब नहीं। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे यशोदा के ललनवा। मैंने उससे पूछा नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा नाम तेरा क्या है। हाँ, ज्वाइन करना है राघव शहनाज जी, इनको भी ज्वाइन करना है। मेरी बहन है छोटी है, सुनहरी मौर्य। कौन सा नाम? यशोदा के ललनवा कौन सा नाम? राघव। किसी का राघव नाम है? राघव राम का नाम है। माधव नाम। शिवाजी मेरे साथ उनको भी support करना। माधव ही लिखा है, वो बता दे, देखो माधव लिखा है। नहीं नहीं हमारे साथ यस करोगे कोई टोक नहीं पाएगा ये गाना। ऐसा है, जाते समय नहीं टोकेंगे नहीं, तो बता दिया आपसे, क्योंकि नाम निकल लिखा माधव ही है। टोकते ही नहीं है। नहीं, माधव लिखा है, लेकिन वो राघव लिखा माधव ही है। उस समय ठीक ठीक, आएंगे बड़े भैया आप। सुधार की जरूरत नहीं है। रोज इस टाइम पे आती है ना 7:30 बजे शहनाज जी। नहीं, लिखा ही माधव। आपके वीडियो में कमेंट करते हैं। हमारे खाने में वो बहन आपको जो साल वगैरह उड़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, क्या प्रोग्राम था वहाँ पर? हाँ शहनाज बहन, हाँ वो टीचर लोग आपको साल उड़ा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, माला डाल रखा है, वो क्या प्रोग्राम था? एक वीडियो में देखा था हमने आपकी। हाँ, इनको भी सपोर्ट कर देना बहन। आप इनका करो, आप इनका करो, दो लोग करो। हाँ, ये बहन बहुत अच्छी है, सुनहरी मौर्य, तो इनका भी सपोर्ट करना। 7:30 बजे लाइव आएगी बहन की। शहनाज ड्राइव टू इम्प्रियन। तुम्हें इस तरह की थोड़ा अभ्रंश आ रहा है, देखो। हाँ, थोड़ा सा कन्या है इसमें। छोटी सी कन्या, ये छोटी सी कन्या, इसमें भी खींचा है, खींचना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी, इसमें सही है। अरे बनेगा तो बनेगा, लिख ले। काहे नहीं बनेगा, बनेगा काहे नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि
एक दो बार है, रोज रिहर्सल करो यार, फिर रूटीन बन जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि आप ये मत ना कि आप नहीं गा पाते, हम ये कह रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए कैसे कैसे गाओगे, हाँ? ये समझ में आए। जैसे गा बजाओ हमें तो अच्छा रहता है, हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली कोई गलत वाला है मेरा लल्ला आने वाला है। वो तो सही है। साजन गंदे संदे वीडियो देखा था हमने। आगे वाले यार हाँ, ले बात। अच्छा, हमारे नहीं किया जाता है। एक तो बताओ क्या सरकार द्वारा होता होगा बहन, कौन सम्मानित करता है? खर्चा कौन देता है? साल वगैरह, माले वगैरह कौन प्रोग्राम कराता है? जेवर माई नहीं आते एक पर बताया शहनाज बहन। खुदवा के जलवा लगते अच्छा, 3 दिसंबर विकलांग दिवस होता है। मुर्गा मुर्गा झूठ। हमने वीडियो देखा था तभी यहाँ। दूर कहीं जाना होगा, पड़ा होगा आपको, इसके लिए है। क्यों शहनाज बहन कि आपके आसपास हुआ था प्रोग्राम भी? तो आप अभी लिख ले थोड़ा। नहीं लिखवा के डाल। हर साल प्रोग्राम होता है। गाय को सुनाओ। बहुत अच्छी बात है, सम्मानित के लिए। फूलों से सजा दो गोकुल को मेरे लल्ला आने वाला। मेरे लल्ला आने वाला, मेरे कन्हैया आने वाला है। पूछ रहे हैं फिर दोबारा ये कब होगा? फिर दिसंबर में होगा। हाँ, हमारे इधर नहीं होता ये प्रोग्राम। हाँ, सजा दो। दूर कहीं गए हो क्या आपको? ये पूछ रहे थे। हाँ, हर दिसंबर में होता है क्या ये बहन ये प्रोग्राम? कोई काजल की डिबिया ले आओ, कोई काला धागा ले आओ, कोई काजल की डिबिया ले आओ। ऐसे चलता हूँ। हमारे इधर नहीं होता ये है। वैसे कुछ जॉब करते हैं बहन? हम देखो ये कपड़े सिलाई काम करते हैं। ले आओ कोई काला धागा ले आओ, लग जाए लल्ला को कहीं नजर न लग जाए लल्ला को। मेरा लल्ला आने वाला, मेरा लल्ला आने वाला। बड़ी सोने का कोई सोने का पलना ले आओ, अच्छा। कोई मखमल चादर ले आओ, कोई सोने का पलना ले आओ, कोई चादर मखमल। वीडियो देखा था हमने आपका। हम कर पूछे थे बहन से। हाँ, ले आओ। हम सोच रहे हैं कि स्कूल का फंक्शन है कोई आपके यहाँ। चलेगा वो। अहमद जी,
कि देखो कि शहनाज बहन हमारा बड़ा सपोर्ट करती हैं। अहमद जी आप इनका सपोर्ट करें हैं शहनाज बहन का है। शहनाज जी को सपोर्ट करें हैं अहमद जी। शहनाज बहन अहमद जी हमारा बड़ा सपोर्ट करते हैं। जब टाइम मिलता तो तुरंत लाइव आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन है कोई चांद कलोटा ले आओ, उसी गाड़ी से आते उसी गाड़ी से जाते होंगे। सोने की थाली ले आप कैसे मैनेज कर लेती पूरा काम? हाँ कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है बैठा मैंने इसमें तो हमने जैसा अहमद भैया बहुत अच्छे हैं बहन, इतना हमारा सपोर्ट करते कि पूछो मत। हाँ लखनऊ से है ये। हाँ दिन भर मान जब टाइम मिलता आते हैं अहमद जी। अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई सोने की थाली ले आओ और कोई चरण धुला दो कान्हा जी मेरे लल्ला। शहनाज बहन वहाँ कैसे आप करती हैं काम? जॉब काम कैसे कर लेती हैं जेरोक्स का? नहीं लगाएगा, उन्नत लगाओ। अब क्या लगे गया? अब चरण पखारो। अच्छा मम्मी रहती होंगी यहाँ। देखो पापा क्या बिजनेस करते हैं आपके? पुष्पाजी शब्द कुछ नहीं वो तो अब जो मेरा जो दिमाग में नहीं, है आप पखारो शब्द हो। देखो भगवान के चरण धोने को पखारना बोलते हैं, हाँ, वो तो- आदमी के चरण धोने को धोना बोलते हैं। वो तो हाँ हाँ कर दिया है कमेंट है। मजा आ गया, बढ़िया नहीं, करेक्शन कर लेना इतना। वो कर लेना। कोई माखन मिश्री ले आओ, कोई लड्डू पेड़ा ले आओ। अरे कोई भोग लगा दो लल्ला दो मेरा लल्ला और अगली लेना है और है कोई ढोल नगाड़े बजवाओ, कोई मंगल गाने, कोई ढोल नगाड़े बजाओ रे, कोई मंगल गाने गाओ रे, कोई कान्हा की जयकार। शहनाज बहन कितने पढ़े हैं आप? क्या ग्रेजुएशन है? कितनी पढ़ाई की आपने यहाँ? इसमें लिखा है कोई ढोल नगाड़े बजाओ रे, कोई मंगल गाने गाओ रे, ढोल नगाड़े बजाओ रे और मंगल गान सुनाओ रे। कोई कान्हा की जयकार करो मेरे लल्लाया। अभी एक लाइन और है, वो है श्री राम भैया के रामायण में लिखा हुआ 3-4 कड़ी से ज्यादा। अच्छा एक शॉप में तीनों लोग रहते हैं? वो उतना नहीं है। हमारी भी 2 शॉप है। भाभी तुम्हारी रहती है वहाँ, एक उसमें लेडीज काम होता है, हम इसमें जेंट्स करते हैं। 2 शॉप। बहुत अच्छी बात है। हाँ इतनी ना तो ज्यादा ठीक नहीं। क्या पढ़ाई कर रखी बहन आपने यहाँ? और गाने वाला भी बोल रहा है शहनाज बहन दूसरा गाना हमारा की ऋषि मुनियों फूल बरसाए। आपने क्या पढ़ाई लिखाई की बहन? है कितना पढ़े आप? थोड़ा सा नहीं नहीं क्यों? अरे ऋषि मुनियों सब बता दो। आप यहाँ लगाओ चलेगा हैं? चलेगा।
बहुत पढ़े हैं बहन आप तो। हाँ आप देवो शब्द लगा देंगे। चलो अच्छी बात है। हाँ हकीकत में देव बताओगे ही वो बोल बताए थे, वो सही बोलिए नहीं नहीं बताए। नहीं सही आपने बताया। वो तो आपकी, अरे आपकी बात तो पूरा कोई सवाल ही नहीं है। मतलब कल ये सोचना है हर चीज में कटिंग करते हैं लोग। नहीं नहीं इनको भी उसमें बैनर में लिखवा देते कि प्रभु कौन तुम्हारी माता बहुत बढ़िया अच्छी बात है बहन, पढ़ाई लिखाई आपने बहुत की है। प्रभु कौन गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी कोई आपकी है? कौन तुम्हारी माता है, प्रभु कौन के लाल सहाय, गोकुल में कन्हैया आए, देवों ने फूल बरसाए। अब कौन तुम्हारी माता है? हम, आप और सपना और ऋतु अनुराग हैं, 4 लोग सेम हैं। कौन तुम्हारी सेम है, 4 लोग हैं। और किसके लाल सपना, ऋतु, आनंद और अनुराग हैं। कन्हैया आए हैं, देवों ने फूल बरसाए। सही बात है ना? कोई जवाब ही नहीं, क्या बड़ा नहीं है। प्रभु देव की चारों लोग सेम हैं। माता है, वसुदेव के लाल कहाए हैं। प्रभु देव की तेरी चल जाएगा। प्रभु देव की तेरी माता है, वसुदेव के लाल कहाए हैं, गोकुल में कन्हैया आए हैं, और फूल देव बरसाए। मतलब कड़ी बहुत छोटी। एक वीडियो में देखा था आप शॉपिंग करने गए बहुत बड़े मॉल में हैं, तो गाड़ी वहाँ चली जाती है आपकी? प्रभु का तुम्हारी पूजा है, प्रभु का भोग लगाए हैं। देखा था आपको वीडियो, शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए गए थे आप? कुछ बन नहीं रहा अभी कर दूसरी है। हाँ। सोच के बता। आपस लोग सब सेम है। ऋतु भी ज़्यादा पढ़ी नहीं, ऐसे लोग पढ़ कम पाते। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी बहन कोई आपको? प्रभु प्रेम भाव मेरी पूजा है, प्रभु प्रेम भाव मेरी पूजा है, माखन का माखन हमारे पास वो वाली गाड़ी है, उसी से आते थे दुकान है। मिश्री सब हटा दो यार। माखन कितने किलोमीटर चल जाती है वो गाड़ी? है प्रभु प्रभु तुम्हारी वो कितने किलोमीटर गाड़ी चल जाती है आपके यहाँ? कौन प्रेमिका है, और किसके संग प्यारे हैं। प्रभु तुम्हारी कौन प्रेमिका है, और किसके संग प्यारे हैं। अरे राधा रानी बहुत अच्छी लगी हमको। हाँ प्रेमिका है, रुक्मिणी के संग प्यारे। मेरे पास वो वाली है जो हाथ वाली है। प्रभु राधा रानी प्रेमिका है, 25 दिन का भी बोल दिया। 25 में तो बेच कर 20 में तो बेच के ये तो बोल देते क्या 20 में तो देते। अरे वो चावल दूसरा था, राशन वाला चावल। सबसे बढ़िया चीज है ना। एक लाइन रह गई, ये लिख लेना। और बहन कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मम्मी पापा आप और भाई बहन कितने हैं? हम लोग 3 लोग हैं बस।
ये बहुत अच्छी गाड़ी, हमने पहली बार देखा उसको। हाँ, इतनी अच्छी गाड़ी किसी के पास नहीं है, हमारे इधर है। तो देखो चलती है ये तुम कर हाँ, हाथ हमारे ठीक है। इससे कुछ अर्निंग हो पाती कि नहीं बहन आपकी यहाँ? यूट्यूब से आता कुछ नहीं आता पैसा आपका? देखो अभी जो है कचरा आपने गाया था, हमारा तो आज टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया, अभी 3000 घंटा हुआ है, 1000 घंटा बाकी है। किससे तुमने प्रेम किया और किससे प्राण रचाया। हाँ, ये भी ठीक, इसीलिए जो देखे प्रेम का शब्द फंस रहा है। हाय समस्या मेरे हाथ में देखो टेढ़े हैं। टेढ़ा है मेरा हाथ। किससे तुमने प्रेम किया और किससे प्यार रचाया। राधा रानी प्रेम किया वाह, कंप्लीट तो हो गया आपको वैसे? ये चले सब क्लियर तो हो गया आपका? मोटा नहीं हो गया? चैलेंज नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हो पाया। नहीं अच्छी मंच पकाया, जो राधा से भी प्यार दिया है कृष्ण। कब मोटा हुआ चैनल आपका? था प्यार। छोटी बहन कब चैनल मोटा हुआ था आपका? वो एक बार एक जगह है कहीं प्रसंग। एक से क्या, लेकिन अब जो ज्यादातर शास्त्रों के आधार पर फंस जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन अब चलेगा चलेगा मेरी बात है, मेरी कहने का केवल इतना मतलब है कि शास्त्रों के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर कोई टोक न पाए। वो इतना कौन ध्यान देने वाले देते, सब कुछ छोटे ऐसे तो फिर बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कहीं न कहीं फंसने वाले। हाँ हाँ, मेरा भी नहीं कोई करता है ऐसे लोग, कौन नहीं सपोर्ट करता है? अब वो तो मौसी, लेकिन आपको पूरा सपोर्ट करती है मौसी? है ऐसा मौसी? ब्याह तो उन्होंने कई किए हैं, अनेकों किए हैं, 7-8 ब्याह किए। हम बहन सपोर्ट करेंगे आपका, आप मेरा करना। 16,108। अरे एक साल हो गया है, विवाह के लायक बहुत दिन हो गया। विवाह किया था उन्होंने, 16,000। विवाह नहीं जो किया है, और हर उसके 10 पुत्र थे, हर रानी के। 16,000 के 60। हमारा हो ही नहीं पा रहा, टाइम नहीं हो पा रहा पूरा। वो तो ज्योतिषपुर से नरकासुर से लाए थे, लेकिन वो तो किया है उन्होंने, लेकिन अब हमारा बहन करा दो। हाँ, 3000 घंटे हो गए, 1000 घंटे हो जाते। वो भी शास्त्रों में विवाह लिखा है। नहीं आप ये नहीं कह सकते विवाह नहीं नहीं, आप फिर हर मंदिर के जगह ये भी लिखा हुआ है, वो विवाह गंधर्व विवाह, वो गंधर्व विवाह। ये जो है उन्होंने वैसे विवाह हो ये गया, वैदिक विवाह। वैदिक विवाह। राधा से भी वैदिक विवाह हुआ है। हाँ। कितने लोग हैं बहन आपकी फैमिली में? मम्मी पापा, आप और भाई बहन कितने हैं? इसको संशोधन गाते समय या अभी देख लेंगे। अच्छा, 3 लोग हम हैं, पहले 4 थे। माता जी मेरी एक्सपायर हो गई, अभी फरवरी में माता जी मेरी एक्सपायर हो गई हैं। हम हैं, भाभी तुम्हारी और भतीजा, 3 लोग हैं बस। ये पेन ठीक नहीं है। ये देखो जरा, सस्ते वाले पेन न लिया करो चाचा। मोबाइल में ये भी नहीं क्या था। 20 रुपए का देते हाँ, थोड़ा अच्छी क्वालिटी। अच्छा, अच्छी क्वालिटी के लिया करो। हम नहीं और हमेशा जब दिखाना किस दिन लाइव में, उसको भाई को भी दिखाना। काले पेन हाँ, हाँ, बात दांत सही। में चमक देता है, और ये सारे दांत में अगर पढ़ना नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं ये काली रिफिल एक ले लें, नहीं पेन 5 रुपये मिलेगा, आटे वाला रिफिल। हम पहले सही थे, हाँ बीच में हो गया था दिक्कत।
हमारे पास ये देखो इलेक्ट्रिक मशीन है ये ये वाली, इससे सिलते हैं। बिजली वाली है मशीन ये रहा। मिस्त्री लिख लेते हैं, फिर काट देंगे। काट काट के तुम दूसरी काट दोगी तो माखन का भोग लगाया बस तुमने। लड़का है मेरा इंटर में है अब की, हाँ पढ़ाई कर रहा है। गुनगुनाए तो खुद ही देख रहे, अपने आप पता चल जाता है आपका सब। नहीं वो तो सही है। डेढ़ साल हो गया हमको। हाँ अगर सड़क पर कोई कचरा होता है तो गाते समय उसकी थोड़ी हड़बड़ाहट गाते समय होती है। तो गला माइक खींचता है, कोई सपोर्ट नहीं करता जल्दी किसी का। कोई नहीं करता है, वो फंस जाता है। ये जिंदगी जंग है, खुद लड़ाई लड़नी पड़ती है। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, उन्हें माली बचाने नहीं आता है। क्यों चाचा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, कोई माली नहीं आता। जिंदगी एक संघर्ष से इसको खुद लड़ना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है बहुत बेकार जिंदगी है, लेकिन सब एक दूसरे को देख के जिंदगी के जी लेते हैं। चलो अगर वो जी रहा है तो हम भी जी लेंगे। हाँ कभी कभी बहुत गुस्सा आती है अपने आप खुद पे। हाँ कोई किसी की दर्द नहीं समझता है। खाली माँ बाप ही हैं ऐसे हैं जो दुख दर्द समझते हैं। आप तो बहन इतना पढ़े हैं तो कुछ कोचिंग है या कुछ ऐसा खोल लेते जिससे एक दूसरे को देख के आदमी जी लेता है कि अगर वो है जी रहा तो हम भी जी ले। हैं वो गाना नहीं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अब बहन आप इतनी बढ़िया गाड़ी है, इतना अच्छा घर है, सब कुछ है, हम लोग पास कुछ नहीं है। हाँ लेकिन हम लोग आपको देख के जीते हैं। हाँ आप बहन बहुत दूर नहीं, आप यहाँ आते एक बार हम। हाँ नहीं सही था, अभी मम्मी पापा हैं, अभी आप छोटे हो। हाँ कल मम्मी पापा नहीं रहेंगे तब थोड़ी दिक्कत पड़ती है, फिर कोई देखने वाला नहीं रही बहन है। हाँ माँ बाप की सिवा दुनिया में। हाँ तीसरा आदमी कोई नहीं चाहेगा आपको। हाँ मम्मी पापा चाहे जैसे हो, चाहे जैसा लड़का लड़की हो, मम्मी पापा जरूर उसको चाहते हैं। हम इतने बड़े हो गए, हमारे माता जी थी
बिना हमारे खाए खाना नहीं खाते थे यहाँ। समझे बहन? माँ बाप वो चीज़ होते हैं। अभी मम्मी पापा हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब कभी जीवन उनका नहीं रह जाएगा। अगर आप जॉब करती हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत ना आती जीवन में। हाँ, साढ़े 6 हो गए बच्चे, 6:30 हो गया। अंधेरा जल्दी होने लगा है। यानी एक जोड़ जल्दी सब करके दिल छोटा हो गया। तो क्या काम पार कर पाएगी। हाँ हाँ, मतलब खरीद रहे, अच्छी बात है। कैसे चलो आपका काम चल रहा है। अब जैसे वो अमित भाई लखनऊ वाले, वो भी मतलब नहीं चल लेते, वो कम चल पाते, 75% है वो। अब उनकी SBI में जॉब लग गई है, उनका जीवन सही हो गया है। गवर्नमेंट जॉब का आदमी लाइफ सिक्योर हो जाती है वो। हाँ, अब भैया उसमें SBI में मैं लग गया तो उसको अब गाड़ी बुक करके जाता हूँ। दिन बता फ़ोन आया था उसका। हाँ, अमित भाई जानती ना? हाँ, लखनऊ से जो है। हाँ हाँ, वैसे अगर आप जॉब गवर्नमेंट जॉब कहीं लग जाती है, आप पढ़े लिखे थे तो बहुत अच्छी बात थी आपके लिए है। माँ बाप किसी को दुनिया में कोई नहीं चाहने वाला है। हम इतने बड़े हो गए लेकिन हमारी माता जी थी, बिना हमारे खाना नहीं खाते थे यहाँ। अगर अभी भी लगे कहीं पर तो कर लेना जॉब आप। राम 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 राम। भैया, कपड़ा हम कल लाएंगे न पानी के लिए। ठीक कोई जोड़ी है? ठीक है। नहीं देगा? हाँ, 13,000 और 13,000 हाँ। मसाला कबाब। देखो चाचा कैसे कैसे लोग आते हैं। और ये गेस्ट हाउस के हैं मैनेजर हैं, सुनीता गेस्ट हाउस के हैं। इनका नाम है राघव शुक्ला, इनका नाम है। हाँ, अरे इतने बड़े कैसे मैनेजर ही कर, तुम्हारे पास 10 रुपया नहीं? लूटने के लिए आदमी बैठा है। हाँ, बहन बहुत अच्छा लगा बात करके आपको। हम हाँ, कोशिश जरूर करना है, कोशिश कामयाब होती है। हाँ, अगर वो जॉब लग जाएगी तो आपको ले, जैसे अमित भाई की लग गई है तो उसे आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। हाँ, ठीक नहीं है, देखो फीका फीका है। कोशिश करना है। जैसे रात में कभी गाना हुआ तो रात में दिखाई नहीं हाँ, देता। वही। देखो उसके बाद ही लेकिन इसको जरा सा काटा नहीं आपको, इसीलिए कोशिश करना पूरी है। अगर लग जाओ तो बहुत अच्छी बात। अगली बार में जरा ही सब आ जाएगा तो खाना चढ़ जाएगा। जरा वो तो आता ही। हाँ।
वो समझते हैं ना, एक तरह से स्टाफ समझोगे, आप भी समझ सकते हो, हम भी आपकी बात समझते हैं। दूसरे लोग नहीं समझ सकते क्या क्या समस्या आती जीवन में है, कैसे कैसे लोग बात बोल देते हैं। खाली आप समझ सकते हो कि तो हम समझ सकते हैं ना, तीसरा पर्सन नहीं समझ सकता आदमी है। अभी मम्मी पापा हैं तो आपको नहीं लगता है, हाँ जब कभी उनका जीवन रह जाए तब दिक्कत पड़ेगी आपको। हाँ इसीलिए हर कोशिश प्रयास करके बहना, इतनी विनती है बड़े भैया से। हाँ कहीं लग जाए तो आप जॉब करना। हाँ एक हमारे यहाँ कंपनी है एलेम्को, हाँ ठीक। हाँ उसमें देखना, उसमें सब लोग ऐसे रहते हैं। एक मैडम बिल्कुल आपके तो हाथ है, उनके हाथ है नहीं है। हाँ वो उसकी मेन है। हाँ आपने बहन नाम सुना है एलेम्को, हमारे कानेपुर में है वो, उसका बहुत बड़ा सब व्हील चेयर वगैरह सब बनाते हैं। हाँ उसमें ऐसे लोग सब करते हैं। हाँ पूरे उसकी जो हेड है आपकी जैसी मैम है वो, उनके हाथ ही नहीं है, खाली पैर हैं, पैर के सेंसर से उनकी गाड़ी चलती है। एक दिन हम गए, देखा उनके पैर नहीं थे, वो गाड़ी घूम रही थी उनकी। यहाँ तो हमने पूछा गार्ड से, हमने कहा ये कैसे गाड़ी चली, पता नहीं करेगा पैर से। एलेम्को नाम उसका, एलेम्को कानपुर। हाँ डालोगे यूट्यूब में, गूगल पे आ जाएगा। उसमें सब लोग आप ही जैसे लोग रहते हैं। किसी का हाथ नहीं, किसी पैर नहीं, किसी दोनों पैर नहीं। जो उसकी हेड है उनके हाथ ही नहीं है मैम के। गूगल पर सर्च करना, हाँ एलेम्को कानपुर कृत्रिम निर्माण, इतना डालोगे तो हाँ आ जाएगा। उसमें व्हील चेयर है, प्लास्टिक के हाथ है, प्लास्टिक के नाक है, प्लास्टिक कान, प्लास्टिक सब बनाते हैं। आप तो पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए नहीं कुछ हो पाया है। कोई भोग लगा दो, बीच में भूल गए थे। लल्ला को मेरे कान्हा को या लल्ला सब बदल दो, कोशिश जरूर करना बहना। आप पढ़े लिखे, इतनी डिग्री है आपके पास तो। मम्मी पापा से स्पर्श बोल देना बड़े भैया की तरफ से। बधाई भी बहुत अच्छा लगता है, लल्ला की सुन के मैं आई। बोल देना बड़े भैया ने चरण स्पर्श बोला है। हाँ वो आपकी दूसरी जगह शुरू कर देना बस। हाँ वो कर दे बात अपने हाँ लेकिन पहले इतनी महंगाई में इसमें कुछ हो नहीं पाता आदमी को। हाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर पढ़े लिखे हो तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा पैसा मिलता है। अब हम लोग का कभी दाल है तो चावल नहीं, घर में चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो सब्जी नहीं, ऐसा होता है। हाँ हुनर तो है लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है। हाँ अगर से कहीं अच्छी जॉब लग जाती है आपकी तो जीवन आराम से कटता है, ये कहने का मतलब है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। कढ़ाई आगे लगा दिया।
अरे भैया भी दे दो हमें चोली भी दे दो भैया। जो उस समय आप साड़ी नहीं लगा सकते, उस समय साड़ी नहीं चलती। साड़ी लिखा हुआ नहीं तो गलत है ना, उस समय साड़ी चलती नहीं तो साड़ी कहाँ से मांगती हुई। अरे भैया भी दे दो हमें चोली भी दे दो। जिंदगी बहुत संघर्ष में होती है। अभी आप छोटे हो, अभी आपको नहीं मालूम है क्या क्या कठिनाई आ जाती है जिंदगी के अंदर है। नहीं भैया चलती है। आप तो बुजुर्ग हो, भैया का रिवाज था, दुपट्टा भी नहीं चलते थे तब। वो तो बात अलग होगी, लेकिन सब हाँ चल गाने जाने में वो है वो अरे इतनी चीजें हैं तो जाना है। भैया दे दो हमें चले न चले, लेकिन काल्पनिक में कभी की कल्पना है, वो कैसे कहाँ ले जाता है कोई भी कभी हो। वो तो क्या चलता था उस समय वो तो बात अलग की है, लेकिन गाने भी चलेगा, कोई भी साड़ी भी चलेगी, चोली भी चलेगी, झुंडर भी चलेगी, आप गा सकते हो। कभी की कल्पना है, वो कहावत है ना, जहाँ न पहुँचे रहे वहाँ पहुँचे तक, वो तो कर देना है। तो देखो मास्टर साहब की काली रिफिल है। मास्टर साहब काली रिफिल है, देख लो महाराज, आप जा रहे हैं, टाइम हो गया, लो देख लो रिफिल। बता क्या बहन, जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया भैया ने यहाँ। अच्छे दिन भी देखे, खराब दिन भी देखे यहाँ। कैसे कैसे लोग प्यार करते हैं, कैसे चाहते हैं यहाँ। दादा अवधि भाषा में लिख लेना। राधे राधे रूबी निषाद जी। और रूबी कैसे हो? ये देखो, ये बहन बड़ी हेल्प करती है हमारी यहाँ, शहनाज जी हैं। जब आए तो घंटों बातें करेगी यहाँ। कम से कम 5 बहनें हैं हमारे, शहनाज जी हैं, आप हैं, एक रूबी निषाद है। ये भी बड़ी हेल्प करती, बहुत बातें करती पूरे घर की। ये नहीं लगता यूट्यूबर है, ये घर के कोई सदस्य हैं। हम जब बात करते हैं तो पूरा घर के सदस्य जिससे बात करते हैं। ये भी जैसे आपसे बात हुई ऐसे रूबी से बात होती है। हमारा जो बहनें आती हैं बिल्कुल घरेलू संपर्क हो जाते हैं। अरे ये शहनाज बहन आई थी यहाँ, इन्हीं से बात हो रही थी यहाँ। ये रूबी निषाद है, ये भी बहुत परेशान है। उधर कह लगे भैया बहुत समस्या है हमारे जीवन में यहाँ। हमने कहा भैया के पास भी बहुत समस्याएं हैं। अपना घर दिखाने लगी, झोपड़ी पड़ी है, घर वर नहीं बना इनके पास। हमने कहा भैया के पास तो घर नहीं, तो सब किराए पर है। ये है जो किराए पर है, दुकान मेरी है, खुद की नहीं है। किराया देना होता है, बत्ती बिल होता है सब। हाँ एक काम कर दे बोलो। मतलब फिटिंग कर दे। ले आओ। बोलो रूबी। जल्दी कर। हाँ अच्छी बात है, शेयर करने थोड़ा माइंड हल्का होता है। हाँ मैंने कोई मॉनिटर स्कूल के ना परफेक्ट है मॉनिटर में। परफेक्ट मतलब क्या होता है? मॉनिटर जो बड़ा होता है उससे क्या रोला जल्दा रोला रोला। हम लोग के हमारे मॉनिटर होता था। ये देखो अपने स्कूल में ये है, इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब एक तरीके से मॉनिटर से बस बड़ा है। मॉनिटर बड़ा मास्टर होता, मॉनिटर बड़ा है ना। मॉनिटर से बड़ा मास्टर होता था हम लोग जमाने में। नहीं यहाँ पे मॉनिटर से बड़ा प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर से बड़ा फिर 2-3 और कैटेगरी है। तब भी मास्टर आता है। तो मास्टर से बड़ा है, इससे बड़ा प्रिंसिपल है। इसको टाइप कर दो मतलब ठीक है। जस्ट सही है, बस यहाँ से आपको टाइप करना है। ठीक है।
तो नीचे से ऐसे करके नीचे बढ़ते हैं ना। इससे बच्चे के अंदर हिंद भावना नहीं पैदा होती है। यही को ईगो निकाल देते हैं कि बार अमीर मैं दिला अमीर ही हो करो अभी गई रे कम है भाई और के लिए तो थोड़ी अरे देखो और क्या इसकी मां बस 10:30 थोड़ा सा कम ज्यादा रखा चलो महाराज तो कहाँ कर रहा है यार 10:30 होगा ये हुई ना थोड़ी देर बाद आओ थोड़ी देर बाद हम जिला घड़ी जा रहे थे उसमें थोड़ा देर धागा बदलना पड़ेगा धागा बदलना पड़ेगा। ये टंकी है किस तरह बहुत दूर है यहाँ रोज आज पैसे खत्म होगा इससे दौरान तो कल मजा ठीक है अरे आप 30 रुपये हुए ना 20 कल दे देगा ठीक है आज कितने लिए मैं तो रोज का सामने दुकान लगी काट दिया टेलर के लिए करो बना दो टेलर क्या करो हमको बता देंगे सामने बिल्कुल है एक पता देगा पीछे आ गए थे लोग बात करने लगे थे बहन है ये भी बहन अनपढ़ है ठीक ठीक आना बहन जरूर कल फिर हाँ जा सकते हैं आप लेकिन कल आना जरूर हाँ 11 बजे से हम पूरा दिन लाइव रहते हैं चाहे जब आए जब टाइम मिले हाँ शहनाज बहन बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आभार आपको आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं शहनाज बहुत दूर रहती रूबी है अपना भी दिखा देंगे ना बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके हम सब लोग आसपास के ही हैं ये भी यूपी से है रूबी भी बहुत दिन से मेरी लाइफ में आती है ये रूबी निषाद
शिवाजी कलाकार हो गए, अब ध्यान रखना। हाँ वो तो संगत असर होता है। एक दिन हमसे धन्यवाद बोलने हमने कहा क्यों, कहने लगे तुम्हारे द्वारा इन लोगों से मिल गया इसलिए। हम्म। काम मंगा तुम उधर पैसे बाकी तुम मंगाओ, 2 दिन तुम गोली दे के
लो रूबी चाट है। सामने सर भाई यहाँ ऐसा ही है, अपने अपने काम। हाँ अहमद जी हाँ। लेना है कभी रूबी देखती है ना इनकी लाइव, हमने कहा दे दे आज एक दे दे, तेरे कहाँ मोबाइल में रहती यहाँ कहाँ लेने। अरे भरोसा ये तो आशिक हैं, मेरा नहीं है, आशिक तो मिलते ही नहीं है। तो तुम्हारा भांजा उस दिन लाइव में आया था एक दिन। कितने काटो के कितने लाओ देखो कैसे काटो खिला दो। 15 दिया होगा, 5 वापस नहीं किया पैसे तुमने क्या? 15 दिया होगा। हाँ ये काटो कैसे काटो, क्या काटो? अरे इसको क्या क्या करें, इसको काट दो सिला ना ये तुम जो बनाओ चलो भाई स्कूल गेम बन जाएगी। बताइए हम काट देंगे भाई, सबका मेरा हाथ है बताओ तो कैसे काटी है आपको नहीं पता? अबे यहाँ इस कटेगी, यहाँ से सिली चुकी है, यहाँ इस कटेगी तो कटवाओ ना तो ठीक है। बड़ी रहने तो क्या कटवा के दो ऑर्डर। कभी कदार बड़ी भी करनी पड़ेगी, हम करनी पड़ेगी नहीं करनी यहाँ दिक्कत नहीं होती नहीं अगर हुई तो ध्यान करती साहब। अरे सर अरे रहने तो उसको क्या काट पूछ रहा है, बना रहे हैं रहने दो। घाटे में हुए घाटे में हो गए घाटा ऐसा पाना तो मिल लेना। तुमने उधर इतना मेरा घाटा कराया, 500 रुपये पहले काम कराया, फिर कहने लगे अब नहीं पसंद है तो खोल दो। नहीं फिटिंग तो हो गई है, सिल गई तो भाई फोन नहीं उठाते, आने दो ऐसे फर्जी है। रूबी फोन और करा करते लोग। कल क्या बजे आओगे? तुमसे उनसे पूछ रहे हैं। किनसे हम मतलब रूबी पूछ रहा रूबी तो आते ही रहती है रूबी का। उसी टाइम बैंक पर ठीक है। हमें जरूर गोला मत देना। वो बोला था हम लोग रोजे अब हैं अभी भी हम बोला नहीं देता उसको बच्चों उसको क्या फाड़ दिया? लियो फाड़ दे बेकार है वैसे। कहाँ बेकार है? लियो कपड़ा लगा बेकार है। रुमाल देते हैं वो पुराना ये दुकान में हाथ करता है, दुकान में हाथ करता है। अब देखो वहाँ जाए तब होगा। हम जाने पर है ना रूबी। अभी नहीं, अभी तो एक है। तुम्हारी 2 दिन की पार्टी बाकी है ना? 2 दिन की कहाँ बाकी है? कोल्ड ड्रिंक लाओ। यदि चाउमीन मंगाई थी यदि कहाँ चाउमीन? घर में मंगाया। दिब्बा के पापा को बुला ला यार। हम कहाँ गए? ये पलाई कटवानी जब से टूट गई ना। फिर हाँ, मंगाई दे कोल्ड ड्रिंक तो। वो तो मिस्त्री काम करते हैं। उनके पास है ना ड्रिल मशीन काटने वाली। जाओ तुम दिव्या हो, उससे कहने टेलर तो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, बिल्कुल से बताएं। उसका पापा निशान लगा चला गया था बाहर। चलो कहाँ निशान करे? वो उसमें जो प्लाई बाहर रखी तब तक बत्ती चली गई थी। कहाँ पे? बात नहीं मानते हो किसी की। हाँ निशान लगा काटने जा रहा तो बत्ती चली गई। अब जा बुला लो हम तो जो टेलर अंकल बुला रहे हैं, बत्ती आ गई है नहीं का खरीद गए हैं। जो कैसी जैसे प्लग लगा वैसे बत्ती चली गई। हम कल मशीन ले क्या बंदे हैं।
तुम तो कह रहे थे पैसे नहीं आ रहा। तुम लोग 100 रुपये 100 अब दे जाओ पैसे 50 रुपये। हाँ पैसा तुमको मिलेगा, उसको थोड़ी कोई मिलेगा। हाँ
हमने चाट खाई, तुमने फुल्का खाया। अच्छी बात है। और तुमने पहले क्यों नहीं कोशिश किया कि हमारा पैसा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? बड़े भैया का इंतजार कर रही थी क्या रूबी? हाँ, पैसे चुरा लिया इसने। हाँ, आधे पैसे चुरा लिया चावल के। हाँ, राधे राधे। अच्छा, क्यों रूबी, इतने दिन हो गए, तुमने कभी क्यों नहीं सोचा कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? कैसे वीडियो पर खाली बनाए जाओ बस। एक बच्चा है मेरे, पढ़ता है वो इंटर में। एक बच्चा है, 3 लोग हैं घर में, भाभी, भतीजा और हम बस। मजाक में नहीं कोई काम होता है। जिंदगी मौत का सवाल होता है। तो एंजॉय करो, ऐसे एंजॉय पैसे से नहीं मिले, कुछ करो एंजॉय है। गरीब आदमी एंजॉय नहीं करता, उसको तो पैसे कमाने पड़ते हैं। हम किस लिए पैसे कमाने उठते हैं, एंजॉय करने थोड़े। एंजॉय तो बड़े लोग करते हैं, रईस लोग करते हैं, गरीब आदमी एंजॉय नहीं करता है। अब ऐसे करो एंजॉय, नहीं मिले पैसे वैसा कुछ तुमको। हाँ, मजाक बना तो मजाक पैसे बनाते रहो बस। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, हम किस लिए आए? पैसे के लिए आए। हाँ, तो बनाते रहो मजाक मजाक में। हाँ, लड़का मेरा अभी इंटर पढ़ता है, हम बाबा हैं। 3 लोग हैं घर में बस। भाभी तुम्हारी सिलाई दुकान खोले हैं, ब्यूटी पार्लर खोले हैं, मेरी वाइफ। हम जेंट्स कपड़े सिलते हैं, देखो वो ब्लाउज सूट है। नहीं, करो एंजॉय, एंजॉय करो एंजॉय है। गरीब आदमी की ज़िंदगी में किस्मत में एंजॉय नहीं लिखा होता, उसको दिन काटने होते हैं। आया है तो दुनिया में तो काम कर प्यारे, और सबको झुक के सलाम कर प्यारे। छेने में यार वो चांद दोनों का नहीं है। हाँ, सीट आया, टूट गई गाड़ी जी। भीगती रही गाड़ी यार। तो हाँ, शर्मा का फोन करना पड़ेगा। भीग भीग के टूट गई सीट पूरी। उनको कर रहे कैसे
तुम चले जाओ, 10-15 मिनट का काम है, हाथ तस्वीर 100-200 जो भी हो जाए फिर देना, कहानी खत्म। दूसरे के भरोसे वो शराबी आदमी पर के सोएगा 9 बजे जगेगा। निशान लगाया लेकिन लाइटें चली गई तब तक। चलो कल वही करेंगे, सुबह आके सबसे पहले क्या करना है? ये मतलब यही प्लाई बदलनी है और क्या करना है। सुबह सुबह आप आओगे तो ड्यूटी निकल जाएगा। नहीं उसको हटाओ, दूसरे ही देखेंगे यार। छेना नहीं, वैसे देखने के लिए तो मैं आप लोग देखो, हाँ आप लोग सोचो छेना खाएगा। हाँ हाँ? आएगा, आ नहीं रहा है। आएगा। हाँ अभी मतलब पूरा हो गया ट्रेनिंग, कल चल रही ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई मेरी। ऐसे रूपी बनाते रहो तो वीडियो बस। हाँ भाभी गुस्साती दाढ़ी वाड़ी के लिए, लेकिन हम नहीं बनवाते हैं। हाँ लड़का मेरा कहता है हाँ कि पापा दाढ़ी बनवा दो, हम नहीं बनाते, हमको अच्छा लगता है। इसलिए कैसे काम करना जरूरी है। भाभी ब्यूटी पार्लर, सिलाई सब काम कर लेती है। पांच भाई, एक बहन है, सब लोग अलग अलग रहते हैं। 5 लोग हैं भाई, एक बहन है, सबकी शादी हो गई, सब लोग अलग अलग हैं। ये माता जी है मेरी। ये माता जी है मेरी। डायल किया गया नंबर उस कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. बोलो रूबी।
कल बोतल आप चली गई थी ना, ये बोतल मेरी ही है। हाँ, कहीं कहाँ गई? खरतिया हो। हरी गुरुजी खरतिया हो।
हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम अंकुश। हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? अंकुश आडवाणी पूरा इंट्रोडक्शन किए पहले। आई एम अंकुश आडवाणी फ्रॉम मुंबई। अभी कोई है ही नहीं। हाय रूबी जी, बोलिए। अभी कोई है नहीं। हैं? हाँ बुड्ढा खाओ अंकल, 4 घंटे का लाइव है ना ये। दिखेगा ना ट्रेलर की पिक्चर दिखा दूंगा। इधर दिमाग तुम बाबू पर आने लगा रहे हो।
तुमको बताएंगे चीर के अपना दिल। तुमको दिखाएंगे। कब तक करोगे इसकी ज्वाइनिंग यार बताओ। बात करते हैं। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो? आई एम अंकुश फ्रॉम मुंबई। ये हमारे चाचा जी हैं। अभी नहीं है कोई। अरे 3 लोग दिख रहे हैं अंकल। दिखने दो। वो कह रहे थे यार प्रॉपर्टी वाला काम
बंद है अभी। हाय रूबी, गुड इवनिंग, कैसे हो? आई एम अंकुश फ्रॉम मुंबई। राधे 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 बिटिया, कैसे हो? हमें तुम्हारे बराबर के। डालो, तुम कैसे डालोगे? अपने ग्रुप में डाल देना कहीं। अब ये देखो एक से एक गुड पागल है। इवनिंग। हाँ। ऐसे तो है सब। अरे बोलो रूबी जी, कैसे हो? आपके हमारी आवाज आपके कानों में नहीं आ रही है क्या? आशा जी कैसे हो? पुनः फिर रूबी जी, हमारा इंस्टाग्राम आईडी लिखो। बुढ़ापे वो कर रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम बूढ़े बता रहे हो यार। हाँ हाँ यार, समझाओ उनको हिंदी में। हाँ, रूबी जी ने हमको फूल बना के भेज दिया। कह रहे बुढ़ापे में। रूबी जी, इंस्टा चलाते हो आप? जो बुढ़ापे बूढ़े करे वो लोग नहीं कर पाएंगे, समझो। अरे बताओ इनको। हाँ हाँ भैया हाँ। हाँ अंकल अभी भी हाँ, गुलाठी मार देते हैं अंकल। वही तो कर। कुछ चीजें होती है जो पुरानी काम आती है, पुराने चावल, पुराने मिर्चा, समझो। हाँ, पुराना क्यों चार, रूबी चलाया करो, पुराना आप सिरका। इंस्टा क्यों हाँ। नहीं चलाते हो?
राधे राधे बहन, कैसे हो? सलमान खान का भी निकला राहुल गांधी कर रहे सलमान खान का कर रहे आई आवाज बहन, कैसे हो? उनका उनका जो उद्देश्य कहने का वो अलग है, अपन थोड़ा इनका ना जोड़ो। आप जो कह रहे हो सलमान खान और का बात है जीतू भाई स्वस्थ है, मस्त है। जीतू भाई चाय नाश्ता हो गया है। जीतू भाई, शहनाज बहन बहुत अच्छी है। और तुमको क्या बुझी है, तुमको बताएंगे, तुमको बताएंगे। ये साहिबा, ये साहिबा। तुमको क्या बुझी है, तुमको बताएंगे। सिया राम जय जय राम, राम
सिया राम सिया राम लक्ष्मण राम अजो हमारी अटूट अभी बनाए ना अपने पॉइंट कल काटे नहीं सब कंपनी का चाहिए पहले हमारी बना तो जबल बनाना है अभी दिन पे खाली से बना लेते हैं हम भी यार क्या बोल रहे हो तो काट देना भैया हाँ निकाल दे हाँ जो रखना था यही कर काट देगा यही काट देगा तो हमारे भी ले जाना साथ ले जाना दोनों दो ही तो है ना
बंदिया सबकी है। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया भजो भजो सिया हम तुमको बताएंगे कि अपना दिल हम तुमको दिखाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहा हमारे जान सुनेंगे सब धन से कमना सिया राम हो राम। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया लक्ष्मण राम भजो भजो सिया भजो सिया
बोला सवेरे उठी जागो शिव बोला दर सिरहानी भांग पड़ी नर झोला सवेरे उठी जागो शिव बोला सवेरे उठी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन हमारी सुफल गवाजू प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन हमारी सुफल गवाजू सिमर राम भजो सिया हो भजो सिया हो जही विधि हो ही नाथित मोरा करहु सुवेग दास मैं तोरा जही विधि हो ही नाथित मोरा करहु सुवेग मैं तोरा जही विधि हो ही नाथित मोरा करहु सुवेग दास मैं तोरा सिमर राम भजो सिया हो भजो सिया हो तुमको गुजरी है हम तुमको राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय बचन कहा से जाना सब हंस समान
राम राम सच्चा राम राम। तेज काम बढ़िया है। कब आए गाँव से? आज सुबह आए कहाँ गए थे? गाँव में नहीं, अभी कहाँ गए थे? अबे मेरे कपड़ा हुआ मुझे छुट्टी में हाँ तुम लाने भूल जाते हो पहले गाँव बोला है। हाँ गाँव में भूल जाते हो। और गाँव बढ़िया तो? कहाँ करा तुम लोग कोचिंग कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन सी कोचिंग? 10 तक काम के लिए उसने बताया नहीं लड़के ने कुछ अभी? फोन किया तुमने? हाँ, क्या बताया? कल बात करी एक मिनट बंद चालू ऊपर जाओ तो इसे सम्मा है अलग अलग सफेद दिखा रहे हैं और कोई पता लगाओ सर और कोई नहीं पता लगा। अब और कोई तो कर भी तो नहीं पाओगे, बात ये है। हाँ, सही है तुम लोग वही काम है, सुबह सुबह वाला ठीक है। ये काम का मिल जाए हाँ, काम लेकिन 4 घंटे में कोई काम किसी डॉक्टर वाक्टर के यहाँ भले मिल जाए तो मिल जाए। चलो देखो अब आए तुम लोग, उस लड़के से कह देंगे हम कहीं कहीं जुगाड़ कराए तुम्हारा। तो यार मेरा काम कर दे बगल से बोलेगा गुड नाइट, तेल खत्म हो गया रिफिल। मच्छर बहुत काट के रहा है, मशीन है खाली रिफिल दे दो बस, ठीक है। गुड नाइट की बड़ी वाली लाना है। गुड नाइट कितने की है 70-80 की मिलेगा, बड़ी वाली, छोटी वाली कम नहीं मिलेगी।
बुला नहीं तो किधर पापा कर क्या बुलाना हूँ हाँ? कहाँ है क्या बुलाना हूँ पता नहीं तान निशान लगा चले गए तो कर बुला देना अगर कोई लड़का चला जाए जाओ हाँ? फिर घर पे जाओ हूँ हाँ हाँ रोज जाता जानते नहीं है बड़ी वाली बिल्डिंग उसे खुद में बुला रहे हैं अभी लड़के को उन्होंने कहा था किसी लड़के को भेज देना जाओ पहले तक बुला रहे हैं कार्ड करके ऊपर चले दूसरी मंजिल पर रहती दूसरी मंजिल पर नंबर नहीं ना तो वो उसके पास मोबाइल नहीं हमें इंतजार कर रहे बुला के लाओ तुम क्या बुला रहे हैं उसकी दुकान जानते हैं भाई ऑटो में लकड़ी वाले की जो यहाँ पर साफ आगे लेके चला गया है मच्छर खत्म हो गए मच्छर बहुत हो रहा है ना इसे में हाँ मच्छर बहुत काटते हैं कई दिन से सोचते पता का जब काटने लगते मच्छर तब होता आता है कि रेगुलर बगल नहीं बैठ कर चोट इसके बगल ये मार्केट के बगल में नहीं है बाइक वाले के बगल में आ रहा है नहीं रोड उधर हाँ मोबाइल वाले के एक मकान राम सिया राम जय जय राम तुम कहा सिया मरे
सिया राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारी फल भवाजू। होई लातीत मोरा, करम सुबेद दास मैं तोरा। सुमण राम भजो शिया हो, भजो शिया हो। ये वाली है ना यही ये 20 रुपए मशीन देने का ही ले रहा है। मशीन है ना, मशीन का पता लेने की। मशीन है हाँ, कितने दिन चल जाता है? चलाने पर रहता है जितने घंटे चलाओगे। हाँ, मतलब 1 घंटे चले 1 दिन में पूरी खत्म ना नहीं, 15 दिन करीब चलेगी। 15 दिन ठीक है। जैसे हम देर सोते हैं, हाँ हाँ हम सोते बड़े के 10:30-11 बजे 80 रुपए मिले। अस्सी की। तो 11 बजे सोते, फिर सुबह बंद कर देते हैं 5 बजे करीब हम। तो 30 दिन 20 दिन ऐसे चल जाते हैं। होता है मच्छर काटते रहते, नींद नहीं पूरी हो पाती, बार बार डिस्टर्ब होता ना, लेकिन सुबह फिर दिन भर करना रहता काम। लाइट चली गई लग रही। गर्मी बहुत। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे फल भवाजू। आज कोई नहीं आएगा, आएंगे सब। आज नहीं आएंगे, 8:30 बजे। गर्मी बहुत, आज लाइट भी काट रहे हैं। हाँ लाइट काट रही, लाइट नहीं काटेगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय विधि
सिया राम जय जय राम। प्रभु की कृपा गयम सब काज राम भजो सिया भजो सिया
हेलो। हाँ, क्या काम था? हाँ, अच्छा, वो हथनुमाई नहीं मिल पाई थी क्या उस दिन? अच्छा, चलो देखो, आगे को तो पूछ के बताएंगे। हाँ। काम चलता रहेगा। वही तो। गाय चाहिए, भैंस नहीं चाहिए? तो गाँव में आए ए, हम्म। चलो देखो, आते हैं लोग हमारे पास तो बताएंगे पूछ के आप।
राधे राधे भाई, राधे राधे। लाइट नहीं थी हमारे यहाँ मिस्टर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट नहीं थी इसलिए बगल में बैठे थे यहाँ। और बढ़िया सर, राधे राधे, राधे राधे। अभी आप अच्छे पढ़ा और बताएं सर। आज सोमवार है, शंकर जी की पूजा की है हमने। अभी नहीं हुआ यार, 10 बजे होता खाना पीना। हाँ अभी तो सो पर हैं हम, देखो। ये शायरी आपकी पूरी तस्वीर के लिए एक दिया था कि आपकी पहले की तस्वीर है। हाँ हाँ, मेरी पहले की तस्वीर है। 1 ईयर एगो। मेरी पहले की बहुत सारी तस्वीरें अच्छी अच्छी हैं, अभी नहीं अच्छी लग रही, शायद अच्छी लगी बात है। कैसे हो छोटी बहन? और बताइए क्या क्या करते हैं? अच्छा, कॉपीराइट आ जाएगा, बंद कर दिया। अच्छा, हम कहें हल्की आवाज़ आ रही दूसरे की, तो उससे क्या है, आ जाता कॉपीराइट। इंग्लिश का माथ यार, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है विठल भाई। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, हम सोचते खाली गाना पर कॉपीराइट आएगा। हम सोच रहे हैं गाना नहीं बजे, बस गाना पर तो मालूम था अगर कोई सॉन्ग बजाएंगे तो कॉपीराइट आएगा। ये तो ऐसे बात सुनना थी दूसरे की लाइव में। गाने के विषय में पता था कि अगर किसी कोई गाना बज रहा होगा तो कॉपीराइट आएगा। बढ़िया है सब, स्वस्थ है, मस्त है सर। ठीक ठीक सर। आप बताएं सर। अभी नहीं बंद किया है, काम बंद होता है 10 बजे। देर से आते हैं, देर से जाते हैं।
काम होता रहेगा यार, काम धीरे धीरे होता रहता है। अपना खुद का काम है, जब मैं तब करो, जब मर्जी बंद करो। नहीं उतना हो जाता यार, हाँ दे देता है परमात्मा इतना, हाँ ज़्यादा नहीं तो दाल रोटी चलती रहे बस। खीरा खा रहे हैं, खीरा। अंकल जी 10 मिनट का टाइम है। उनका काम अरे 10 मिनट का काम है। 3-4 कपड़े हैं उसके। क्या होना? अरे दुकान वाले कपड़े हैं ना, उनकी सिलाई हो गई खाली को। ले आओ। और इसे बदमाशी चल रही तुम्हें, बस इतने सब में सिलाई की है। खींच और भूल जाएगा, हैं? किसी दाग कर दे हम। कर दो कोई नहीं। और दुकान नहीं चल रही? सुबह क्या बजे खोलते हो दुकान? सुबह 7। जहाँ बाबा थे उसी में है कि इधर उधर है कहीं? अबे वो शिव देवी लिखा है वे, पढ़े लिखे। दादी नाम आ लिखा। लिखित कर सब तारीख क्या है? दुकान बढ़िया चल रही? 7 बजे खोल देते सुबह? खींच के टाइट करना, मतलब इनकी लास्टिक ऐसे में जो जब करिएगा तो लास्टिक ऐसे खींचते। या कुछ समय पश्चात प्रयास राधे राधे बहन, राधे राधे। आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। या जिस व्यक्ति राधे राधे सहराज बहन।
किसी को बात कर रहे हैं? अरे पैसा लेना है जो पैसा लेंगे टाइम पे भैया भैया, जब देना है तब पैसा नहीं है। तुम कर पढ़ाई वढ़ाई करके और थोड़ा कोई बढ़िया काम खोलना चाहिए था यार। हैं? पढ़ाई से ज्यादा इसमें पैसा चाहिए काम। बढ़िया है बहन, काम कर रहे हैं थोड़ा। हाँ, और आप लाइट बंद कर दी थी? हम गए थे देखा बंद हो गई थी। कटिंग वाले नहीं बाल काटते हैं, वो कपड़ा है। और मम्मी पापा आ गए कि नहीं आए शहनाज अभी? अरे खींच के खींचा नहीं इसको। नहीं खींचे ना। चाहे अरे काट सकते हैं। काटो बाटे क्या कर रहे हैं? लाइव चल लाइव चल। इसको पूरा छीलना पड़ेगा आगे पीछे से मतलब बढ़िया है बस बहन। हमारा तो वॉच टाइम नहीं हुआ है अभी। हाफ मोटाइज हो पाया, 3200 घंटा हुआ है। उसको शहनाज बहन पूरा करा दे। हैं और थोड़ा फटा कर सिला दे करो, बिल्कुल बेकार हो तब लेके आते हो। अरे नए कपड़े थे, वॉशिंग मशीन में डाल दिए, वो फट गए। अब जब से वो काम ही चला तो रक्षाबंधन पड़ गया, फिर हम क्या हटाओ, रक्षाबंधन की बात ही कराएंगे। नए कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में डाल दिए, और वह जो वॉशिंग मशीन जो घूमता है ना, उसके नीचे चले गए सारे कपड़े, और वहाँ से हमने खींच खींच के निकाले तो ये मोटर में फंस गए थे, तो वहाँ से सिलेंडर। तब से अब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर अब यही था कि समय नहीं मिल पा रहा था। जब हम आते थे तब आपकी दुकान बंद, इसलिए आज हम जल्दी आएंगे, हमने कहा काम करा दो। ना हम तो 10 तक रहते हैं। अरे हम 10:30 हो जाते हैं ना, 10:30 11 बजे।
बाई चांस की बात है जो जल्दी आ गया। हमारा 9:30 पौने 10 मिनट। तभी आज हम जल्दी आए हम लाओ काम करा देना। राधे 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 बोल देना मम्मी से। और पापा नहीं है बहन अभी? अल्लाह हो गया सब। बस ये तो वाच टाइम हमारा कंप्लीट कराएं बहन कैसे? और दो यार अब कितना 20 और दो। राधे राधे सुनीता जी। ये चीज नहीं है। अबे कभी कभी तो दे रहे हैं आप तुमको बता रहे। बंदे के लिए इतना नहीं होएगा तो किसी लिए होगा। राधे राधे सुनीता बहन राधे राधे चलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा पापा शरण स्पर्श बोल देना मेरी तरफ से। हाँ और सुनीता बहन ये देखो सुनीता बहन है, जानते हो ना इनको? शहनाज बहन। और सुनीता बहन खाना पीना बन गया कि नहीं बना अभी? वो 10 रुपये लाए थे भैया। अरे रहने हाय नहीं रखो। अरे आ रहे तो बिहार कितने बजे कहते 8 बजे तुम रहते हैं कहता क्या खत्म हो जाते चले जाते हैं। अच्छा अच्छा था वो 10 रुपये के साथ। बढ़िया है। हाँ बढ़िया। तो थोड़ी मात्रा कम है। मात्रा थोड़ी कम है। 10 रुपये ठीक देता तो मैं रोटी बना दो। उनका नेट खत्म है। सपना बहन का आज लाइव नहीं आएगा। पहले 3 लोग थे तो उन्हें दिया नहीं। सपना बहन की मोबाइल में नेट खत्म है आज। हाँ सुनीता बहन जीतू भाई अभी 9 बजे वहां से ट्रेन पे चल चुके हैं। अब सुबह आएंगे। हाँ हाँ आज अभी बात हुई थी। हाँ कह रहे सपना बहन ने बहुत खिलाया, बहुत सेवा की, बहुत सम्मान किया भाई। हाँ शहनाज बहन राधे राधे बोल रही सुनीता जी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा। बताएं सुनीता बहन कैसे हो?
हाँ, जीतू भाई बहुत तारीफ कर रहे हैं सपना बहन की। हाँ, उसकी आवाज़ में जादू है। हमने एक दिन बोल दिया, हमने कहा बहन तुम्हारी आवाज़ में जादू है, सपना बहन है, चुम्बक की तरह खींच लेती है अपने पास से। बहुत प्यारी हो। सही बात। बहुत अच्छी सपना बहन। दस बजे बंद करेंगे। हाँ, बहुत प्यारी सपना बहन। आप दोनों, आप भी प्यारी हो सुनीता बहन। हाँ, सपना बहन के लाइव में जितने लोग आते हैं सब भी एक से एक महान है। हाँ, शहनाज बहन है, सुनीता बहन है, जीतू भाई है, अमित भाई है। सपना बहन एक मूवी है, समझो, उसके सब कलाकार हैं। हाँ, हर कलाकार अच्छा है। सपना बहन मूवी है। सपना बहन एक पेड़ है, समझो, उसकी डाले हैं, जड़े हैं, सब लोग। हाँ, सब लोग अच्छे हैं। आप सुनीता बहन कितनी अच्छी आप हो। हाँ, बोलो शहनाज बहन पूछ रही खाना। हाँ, उस जितने चैनल के सदस्य हैं। हाँ, सपना सब जैसे मूवी है, उसके जितने भी कलाकार हैं, जीतू भाई, शहनाज भाई, सुनीता बहन, सभी लोग जितने भी पात्र हैं सभी लोग अच्छे हैं, एक से एक बढ़ के हैं। अगर किसी लाइव में जाओ तो बता दो, सपना जी की लाइव से आदमी समझ जाता है कि अच्छे लोग होंगे। हाँ, साफ सुथरा चैनल, साफ सुथरी बात है ना उस पर। बढ़िया है सब लोग। सुनीता बहन सपना बहन अच्छी हैं, आप अच्छे, शहनाज बहन अच्छी हैं, सुनीता बहन अच्छी, इसीलिए सब लोग अच्छे लोग उस लाइन में आते हैं। शहनाज बहन और सुनीता, शहनाज बहन सुनीता जी हम लोग पास में ही हैं। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, सबसे पास में हम ही दोनों लोग हैं। इतने लोग हैं यूट्यूब की सपना बहन की, सबसे पास में हम सुनीता बहन हैं, और बाकी सब लोग दूर दूर हैं। उसके बाद भी शहनाज बहन वो भाई पास में है, अमित भाई। हाँ,
हम कानपुर में है, सुनीता बहन उन्नाव में है, जीतू भाई लखनऊ में है। तीनों लोग लगभग पास पास में हैं। हाँ, हम और सुनीता बहन सबसे पास में हैं। उसके बाद फिर अमित भाई है। जीतू भाई तो दूर है, जीतू भाई गुजरात में है। हम तीनों लोग आस पास में हैं। बाकी सब लोग बहुत दूर दूर से हैं। सपना बहन दूर है, जीतू भाई दूर है। हाँ, सबसे दूर